Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 2, fractions. This is our lecture number 5. Topics to be covered. Exercise 2C, page 23. Comparison of fractions. Exercise 2D, page 25. Now beta, we will solve exercise 2C, question 2, part A in the book. Okay, let's start. Question number 2. Fill the boxes with correct fraction. Part A. Here in part A, this number line is given and this 0.4 equal to 0 and 4/4 equal to 1 are already mentioned. Okay, and this box is also given. आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है? करेक्ट फ्रैक्शन. Okay, and beta, this number line is divided into 4 equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4. Okay, here first point means 1/4. So second point means 2/4. So what will we fill here in this box? 2/4. Correct fraction is 2/4. In part B, see, in part B, this number line is given in your book. Okay, and here 0/8 equal to 0, 8/8 equal to 1 are already mentioned in your book. Okay, and this box is also given. आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है? करेक्ट फ्रैक्शन. Okay, and beta, this number line is divided into 8 equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so here first point means 1/8. Second point means 2/8. Third point means 3/8. Fourth point means 4/8. Fifth point means 5/8. So what will we fill here in this box? The correct fraction is 5/8. Clear? Understood, beta? Now, in exercise 2C, same question number 2. Fill the boxes with correct fraction. Now we will solve part C. Okay, in part C, this number line is given. Okay, so here in this given number line, 0/9 equal to 0, 9/9 equal to 1 are already mentioned. Okay, and this box is given. You have to write the correct fraction in this box. Clear, beta? Understood? Now, this number line is divided into 9 equal parts. Let's count. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so here first point means 1 upon 9, second point means 2 upon 9, third point means 3 upon 9, fourth point means 4 upon 9, fifth point means 5 upon 9, and sixth point means 6 upon 9. So we will fill here 6 upon 9. Correct fraction is 6 upon 9. Clear? Now beta, we will solve part D. अब हम part D solve करेंगे. Here in part D, this number line is given. Okay? 0 upon 10 equal to 0. 10 upon 10 equal to 1 are already mentioned in your book. Okay, and this box is also given. You have to fill the box with the correct fraction. Okay, and this number line is divided into 10 equal parts. ये number line कितने parts में divided है? 10 equal parts में. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and here this first point means 1 upon 10, second point means 2 upon 10, third point means 3 upon 10, fourth point means 4 upon 10. So what will we fill here in this box? 4 upon 10. Correct fraction is 4 upon 10. Understood? Now beta, our next topic is comparison of fractions. Number 1, when the numerator is same, then the fractional number that has smaller denominator is greater. Are you getting my point? जब बेटा न्यूमरेटर सेम होता है, then fractional number that has smaller denominator, fractional number का जो smaller denominator है ना, वो क्या होगा? बड़ा होगा. Okay? See here 1 upon 2 box 1 upon 3. See here numerators are same. दोनों में 1 1 है. दोनों का न्यूमरेटर सेम है. 1 upon 2 में भी न्यूमरेटर 1 है. 1 upon 3 में भी न्यूमरेटर 1 है. Okay, so both are same. Numerator is same. Okay, तो जो इसका स्मॉलर डिनोमिनेटर है, मीन्स ये 2 आपका क्या है? 1 upon 2 में 2 इज डिनोमिनेटर, 1 upon 3 में 3 इज ऑल्सो डिनोमिनेटर. तो इसमें स्मॉलर डिनोमिनेटर क्या है? 2. तो हम यहां पर कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन साइन. हियर we will put greater than sign here. Okay, clear? Now comparison of fractions. Number 2, when the denominator is same, then the fractional number that has greater numerator is greater. अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शनल नंबर में बड़ा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा. ग्रेटर न्यूमरेटर ही बड़ा होगा. क्लियर? सी here in 3 upon 4
3 is our numerator, 4 is our denominator. In 2 upon 4, 2 is our numerator, 4 is our denominator. As I told you, when the denominator is same, देखो denominator same है, दोनों में denominator 4 4 है, both are same. तो फ्रैक्शनल नंबर में जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, वहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे बड़े न्यूमरेटर की तरफ. क्लियर? हियर ग्रेटर न्यूमरेटर इज 3. 3 बड़ा है, 2 छोटा है, सो वी विल पुट ग्रेटर देन साइन हियर. क्लियर? Now beta, we will solve exercise 2D, question number 1 in the book. Let's start. Question 1, write less than, greater than or equal to in the box. Let's solve part A. Part A. Here these two fractional numbers are given in your book, 1 upon 5, 1 upon 8. And here box is given. आपको इस बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगाना है. तीनों में से एक साइन लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल एज आई टोल्ड यू. अभी मैंने आपको लास्ट प्रीवियस टॉपिक में क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको रूल्स भी बताए थे. अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स यू हैव टू पुट साइन हियर. Okay, see beta, here in 1 upon 5, 1 is our numerator, 5 is our denominator. In 1 upon 8, 1 is our numerator, 8 is our denominator. Okay, see here, both numerators are same. दोनों न्यूमरेटर सेम है. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के, तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर. ओके, तो हम यहां पर ग्रेटर देन साइन लगाएंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ वी विल सॉल्व पार्ट बी. In part B, given fractional numbers are 4 upon 10 and 4 upon 5. See, here in 4 upon 10, 4 is our numerator, 10 is our denominator. And here in 4 upon 5, 4 is our numerator, 5 is our denominator. So beta see here, both numerators are same. Okay. तो अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो आपका स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है, यहां पर आपका 4 अपॉन 10 में ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर है, यहां पर 4 अपॉन 5 में ये 5 भी डिनोमिनेटर है. तो जो हमारा स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रेटर. सो वी विल पुट लेस देन साइन हियर. क्लियर? In part C, given fractional numbers are 2 upon 5 and 2 upon 8. Here in 2 upon 5, 2 is our numerator, 5 is our denominator. Here in 2 upon 8, 2 is our numerator and 8 is our denominator. See, here numerators are same. तो जो हमारा स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर. सो वी विल पुट हियर ग्रेटर देन साइन. क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व पार्ट डी. अब हम पार्ट डी सॉल्व करेंगे. हियर इन पार्ट डी, गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स आर 3 upon 4 and 3 upon 4. See, here numerator is 3 and here numerator is also 3. In 3 upon 4, denominator is 4. Here also in 3 upon 4, denominator is 4. So both are equal. So we will put here equal to sign. Clear? Part E. Now we will solve part E.
Here in part E, given fractional numbers are 5 upon 10 and 4 upon 10. Okay? Now see, according to rule, हम इसमें साइन लगाएंगे जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया भी है बेटा कि बेटा here see in 5 upon 10, 5 is our numerator, 10 is our denominator. In 4 upon 10, 4 is our numerator and 10 is our denominator. See, here denominators are same. जब denominator same होते हैं तो जो न्यूमिरेटर का ग्रेटर नंबर होता है वही ग्रेटर होता है. So here numerator greater number is 5. 5 बड़ा है 4 छोटा है. So we will put here greater than sign. Clear? Understood? Now we will solve part F. In part F, given fractional numbers are 3 upon 8 and 6 upon 8. Here 3 is our numerator, 8 is our denominator. Here 6 is our numerator and 8 is our denominator. Okay, see here denominators are same. यहाँ denominator same है. Okay, तो जो हमारा greater numerator होगा वही बड़ा होगा. So greater numerator is 6. 3 छोटा है 6 बड़ा है. So we will put here less than sign. Understood? Clear beta? Now in exercise 2D we will solve question number 2. Choose the beads of the greater value. आपको beads choose करनी है जिसकी वैल्यू बड़ी है. Okay, see here in part A, these two fractional numbers are given 4 upon 5 and 6 upon 5. तो आपको ये दो beads हैं. इन beads के अंदर fractional number लिखे हुए हैं. Okay, तो बेटा you have to choose the correct bead. आपने इन दोनों beads में से correct bead को choose करना है जिसकी greater value. Okay, as I told you beta here in 4 upon 5, 4 is our numerator, 5 is our denominator. Here in 6 upon 5, 6 is our numerator and 5 is our denominator. See, denominators are same in both fractional numbers. डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है बेटा, तो जो न्यूमरेटर का ग्रेटर नंबर होता है ना वही बड़ा होता है. सो ग्रेटर वैल्यू किसकी है इसमें, 6 upon 5 की. सो वी विल पुट टिक here in this bead जिसके अंदर 6 upon 5 लिखा हुआ है. क्लियर बेटा? नाउ part B. In part B, these two beads are given with fractional numbers 3 upon 10 and 5 upon 10. Okay, आपको इसमें बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर में से किसकी ग्रेटर वैल्यू है, किस नंबर की. See here beta, in 3 upon 10, 3 is our numerator, 10 is our denominator. Here in 5 upon 10, 5 is our numerator, 10 is our denominator. See here denominators are same. यहाँ denominator same है तो numerator में जो बड़ा होगा न्यूमरेटर का नंबर उसकी वैल्यू बड़ी होगी, वो बड़ा होगा, उसकी ग्रेटर वैल्यू होगी. सो दैट इज 5 upon 10. सो वी विल पुट अ टिक हियर इन दिस बीड जिसमें 5 upon 10 लिखा हुआ है. क्लियर? नाउ पार्ट सी. Here in part C, these two beads are given with
फ्रैक्शनल नंबर्स, आपकी बुक में ये दो बीट दिए हुए हैं जिसमें ये फ्रैक्शनल नंबर लिखे हुए हैं 1/5 and 1/8. Okay, see here in 1/5, 1 is our numerator, 5 is our denominator. Here in 1/8, 1 is our numerator and 8 is our denominator. See here numerators are same. यहाँ न्यूमिरेटर सेम है, बी केयरफुल. ओके, ध्यान रखना है आपको. न्यूमिरेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. ये अलग अलग हैं डिनोमिनेटर. तो जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है उसकी ग्रेटर वैल्यू होती है. सो हम यहाँ पर किस बीड को चूज करेंगे आउट ऑफ दीज टू बीड्स विच हैज ग्रेटर वैल्यू? दैट इज 1/5. So we will put a tick here in this bead. Understood? Now we will solve part D. In part D, these two beads are given in your book with fractional numbers 4/11 and 8/11. Here in 4/11, 4 is our numerator, 11 is our denominator. In 8/11, 8 is our numerator and 11 is our denominator. See beta, here denominators are same. अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमिनेटर का ग्रेटर नंबर होता है उसी की ही ग्रेटर वैल्यू होती है. ओके, सो हियर न्यूमिनेटर ग्रेटर नंबर इज 8. तो हमारा ग्रेटर वैल्यू का नंबर कौन सा हुआ? 8/11. सो वी विल पुट टिक हियर इन दिस बीड. क्लियर? वी विल चूज this bead in which 8/11 is written that has greater value. Clear? Now beta, today's homework is, आपका आज का होमवर्क है बेटा, you have to read page 26 addition of fractions with the same denominators and learn table of 12 and 13. Clear? आपको पेज नंबर 26 रीड करना है, चैप्टर 2 फ्रैक्शन का. टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स and you have to learn table of 12 and 13. Clear? Now beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Okay, let's start. Question number 1. Mark the points which represents the given fractions. Part A. In part A beta, given fraction is 1/5 and given number line is this. Okay, आपने इस number line पे this given fraction 1/5 represent करना है. Okay, by marking the points. Clear? See here on this given number line, 0 and 1 are already marked. Okay, and this number line is divided into 5 equal parts. Let's count 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now beta, here this first point means 1/5. Okay, second point means 2/5. Third point means 3/5. This fourth point means 4/5. Okay, as it has asked in the given question, we have to represent the given fraction, that is 1/5. हमने इस
नंबर लाइन पे 1/5 को रिप्रेजेंट कर दिया है. Okay, now we will mark this point or we will encircle it. Okay, see, we have encircled this given fraction 1/5. Okay, now we will solve part B. In part B, given fraction is 5/7 and this number line is given. We have to represent this given fraction 5/7 on this given number line. Okay, here on this given number line 0 and 1 are already mentioned. Okay, so beta here this first point means 1/7, second point means 2/7, third point means 3/7, fourth point means 4/7, fifth point means 5/7, sixth point means 6/7. As beta it has asked in the question, we have to represent the given fraction on this number line. So beta here given fraction is 5/7 and we have represent here on this given number line. Now we will mark point here. यहाँ हम 5/7 पे या तो point mark करेंगे और we will encircle it. Okay. Now we will put circle here. See. 5/7 पे हम एक सर्कल बना देंगे. Understood? Got it, beta? Have you cross-checked your homework? Thank you.